So this is a paper May June 2021. May June 2021 variant 32. Look at question number 1. The diagram shows a monopolistically competitive firm. Which point represents allocative efficiency? Remember, allocative efficiency kya hoti thi? Productive efficiency is the lowest point on your average cost curve, and allocative efficiency is price is equals to the marginal cost. सही, जहाँ पे price और marginal cost दोनों बराबर हो. This is your allocative efficiency. P is equals to MC. सही है. And since this is a monopolistically competitive firm, तो आपका ये average revenue curve. सही. So what will be the point of allocative efficiency? This point. Point C, it is the point where price and marginal cost, or in other words, price is equals to average revenue, will be equal. Say, so point C is the point where we have allocative efficiency. Is that clear? Look at question number 2. What is an argument against government intervention when there is a market failure? So what is the argument against government intervention? Say government intervention के against क्या argument है? When there is market failure, government intervention could increase positive externalities. Government intervention could increase the availability of merit goods. Government intervention could lead to a less efficient outcome. And D, government intervention could reduce information failure. Argument against देना है कि government intervention के against कौन सा argument होगा in the case of market failure. हाँ भाई, which one? Government intervention could lead to less efficient outcome. Yeah. Say this is against market failure. अगर positive externalities को increase कर रही है, that is a favorable. अगर availability of merit goods को increase कर रही है, again it is favorable. और अगर आप reduce कर रहे हो information failure को, it is also favorable. The only argument which is against is option C. Look at question number 3. A government is choosing between 4 routes for a new road. The table provides the detail of the cost and benefits associated with each route. The government wants to get the highest returns for taxpayers in terms of the social benefit relative to the private cost. So government क्या चाह रही है? Government चाहिए कि highest return मिले to the taxpayers in terms of social benefits. Social benefits क्या होते हैं? Social benefits are private benefit plus external benefit. सही है? Relative to the private cost. अब देखो 25 plus 5 is 30. 30 plus 10 is 40. 25 plus 10 is 35. And 35 plus 10 is 45. ये सारे क्या है आपके social benefits हैं. सही है? अब which one is giving the highest return against the प्राइवेट कॉस्ट? हाँ भाई, किस में सबसे ज्यादा गैप है? सोशल बेनिफिट को अगर मैं सोशल बेनिफिट में प्राइवेट कॉस्ट को रिड्यूस करूं, सो विच वन इज हाईएस्ट? 30 minus 20 is 10. 40 minus 25 is 15. 35 minus 20 is now give it 35 minus 20 is 15, and 35 plus 45 minus 30 is 15. हाँ भाई, the government wants to get the highest return. किस वाले में आपके पास highest return आ रहा है? देखो इन तीनों में क्या है? रिटर्न कांस्टेंट है 15 15 15. बट व्हाट इज द डिफरेंस? इन ऑप्शन सी आपकी जो प्राइवेट कॉस्ट है वो मिनिमम है एज कंपेयर टू ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. सही है? सो दैट इज व्हाई यू विल सिलेक्ट ऑप्शन सी के वहां पे आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो मिनिमम है, सो यू विल ऑप्ट ऑप्शन सी. सही है?
that clear? Donald maximizes his utility when buying a paper book. When buying a paperback books and audiobooks. The price of paperback book is $3 and the price of an audiobook is $6. If the marginal utility of the last paper book was 12, MU क्या है भाई? MU of paper book is 12. Utils, what was the marginal utility of the last audiobook purchased? सही है. अब क्या करना है? देखो आपको यूज करना है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल. MU of P, MU of the paper book upon the price of paper book should be equal to the marginal utility of audiobook upon the price of audiobook. So the marginal utility of paperback book is कितना है भाई? 12 upon what is the price of paperback book? 3. While हमें MU नहीं पता audiobook की, while the price of audiobook is 6. So this is equals to 4. 4 is equals to MU of audiobook upon 6. 6 यहाँ पे जाके multiply हो जाएगा. MU of audiobook should be equal to 4 into 6, which is 24 utils. The option will be D. Say the equimarginal principle के accordance, the MU should be 24. Look at question number 5. If the statement correctly describes the result of a price increase of an inferior good. अगर inferior good का price increase होगा तो क्या होगा? अबे क्या होता है inferior good में? According to the indifference curve analysis, what will happen? Come on, guys, that is very easy. अगर देखो प्राइस इंक्रीज होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा नेगेटिव. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल इन्फोर्स द कंज्यूमर टू बाय लेस. लेकिन सिंस द गुड इज इंफीरियर, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो इट विल बिकम लेस इंफीरियर. इनकम इफेक्ट विल बी पॉजिटिव. मतलब इनकम इफेक्ट इनकरेज करेगा फर्म को और कंज्यूमर को टू बाय मोर ऑफ द गुड. सो दे both effects same नहीं होंगे. The substitution effect causes the consumer to buy less of the good and the income effect would cause the consumer to buy more of the good. So the answer will be C. Look at question number 6. Which statement about monopoly is correct? Profit maximization occurs when the average cost equals average revenue. Sales maximization occurs when the marginal cost equals marginal revenue. Sales revenue maximization occurs when the marginal revenue is equals to 0, and desatisfying occurs when the marginal cost is equal to 0. What will be the alternative aim? It should be C. Sales revenue कहाँ मैक्सिमाइज होता है? जहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाए, वहां पे आपका टोटल मैक्सिमाइज हो जाएगा. Look at question number 7. A satellite communications company is bought by an investment bank. Satellite company investment bank ने खरीद ली. Which outcome has resulted from this purchase? हाँ भाई क्या हो रहा है? It will be a diversification. सही है? It will be an example of diversification. Good job. The diagram shows the long run average cost curve for a firm and 3 short run
एवरेज कॉस्ट कर्व. सही है, ये तीन आपके पास एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं. शॉर्ट रन के SREC1, SREC2, SREC3, and this is the long run average cost curve. Which statement is correct? When the minimum point of SREC3 is lower than the minimum point of SREC2, it reflects the law of variable proportions. The law of diminishing returns explain why each of the SREC is U-shaped. The position of SREC2 shows the minimum efficient scale of the production. And D, the rising section of SREC1 indicates the existence of diseconomies of scale. देखो diseconomies of scale क्या होती है? Diseconomies of scale is a long run concept. So it cannot be shown by SREC. It will be shown by LRAC. अगर ये आप यहाँ से देखो, ये जो है ये आपको diseconomies of scale बता रहे हैं, not your SREC. This statement is incorrect. Option C देखो, the position of the minimum efficient scale. This is your minimum efficient scale ना. ये point है SREC3. ये पॉइंट है मिनिमम एफिशिएंट स्केल. ये वाला जो है जब आपको कांस्टेंट रिटर्न्स हो गया, नॉट SREC2. दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एक्सप्लेन्स व्हाई ईच SREC इज यू शेप. सही है, जो आपको SREC यू शेप होता है, ये आपको क्या बता रहा होता है? देयर इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. क्योंकि जब आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कम हो रही होगी, सही, व्हेन इट इज गोइंग डाउन, your firm will experience increasing returns to scale. लेकिन जब ऐसा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऊपर जाएगी, देयर विल बी डिमिनिशिंग रिटर्न. सही है, तो द आंसर विल बी बी. स्टेटमेंट ए क्या है? व्हेन द मिनिमम पॉइंट ऑफ SREC3, मिनिमम पॉइंट ऑफ SREC3 इज दिस, is lower than the minimum point of SREC2, minimum point of SREC2 is this, it reflects the law of variable proportions. Again, law of variable proportions क्या बताता है आपको? The shape of SREC, not your LRAC. अगर ये हो रहा है, that is SREC2 का जो मिनिमम पॉइंट है is higher than SREC3, it shows you economies of scale, not law of variable proportions. Say the correct answer will be B. Are we good? Look at question number 9. What is most likely reason that barriers to entry might lead to X inefficiency? Why there will be why the barriers to entry will lead to X inefficiency? The firm does not account for any external benefits. The firm has no incentive to cut its cost of production. C is the firm's price is set higher than its average cost, and D, the firm's price is set higher than its marginal cost. हाँ, X inefficiency क्या होती है? X inefficiency is के lack of competition की वजह से फर्म्स जो हैं उनमें कोई efficiency का प्रेशर नहीं है. सही है, या मतलब they don't want to decrease their average cost ना, ये हो जाती है ना आपकी X efficiency. So why might there be X inefficiency? The firm has no incentive to cut its cost of production. क्योंकि आपके barriers to entry है, फर्म को पता है कि उनको competition नहीं फेस करना, और जब उनको competition नहीं फेस करना, they won't become X efficient. They will remain X inefficient. So they won't cut their cost down. So you look at question number 10. The diagram shows the long run cost and revenue curves for a public sector monopoly. भाई ये long run average cost है, ये long run marginal cost है. करंट को जरा शेड कर लेना. This is your long run average cost. This is your long run marginal cost. Same. The government decides to set a price that maximizes social welfare. Government ऐसा price set करना है जो आपकी social welfare को maximize करे. What will be the consequence of this decision? The firm will experience diseconomies of scale. The firm will make losses. The firm will maximize the profit. The firm will maximize total revenue. हाँ भाई, होना चाहिए था अगर फर्म मैक्सिमाइज करती है अपने प्रॉफिट, तो जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल आ रहे हैं एट दिस पॉइंट, वो यहाँ पे प्रोड्यूस करते.
this should have been the price and this is the average cost. तो ये आपका सारा area of profit था. लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सोशल वेलफेयर के लिए जा रहे हो. तो गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग सोशल वेलफेयर. सही है. द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू सेट अ प्राइस दैट मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर. तो कौन सा प्राइस होना चाहिए जो आपका सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करे. सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइजेशन के लिए आइदर दे शुड बी मेकिंग सेटिस्फाइंग प्रॉफिट. सही है. ये हो सकता है कि आपका जो है ना प्रॉफिट का लेवल जो है इट कैन बी सेटिस्फाइंग या योर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सेटिस्फाइंग प्रॉफिट के लिए जाते तो आप यहाँ पर होते जहाँ पे आपके पास एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू आर इक्वल. सही है. यहाँ पे आपको द मोनोपोली फर्म विल बी मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट. लेकिन अगर आप इससे भी नीचे आ जाओ, लेट्स से गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस ऑफ, गवर्नमेंट ने बोला भाई ये वाला प्राइस रखो. Let's say the government decides to keep the price this one, where the marginal cost and average revenue are equal. ये कौन सा allocative efficiency का point हो गया ना. Marginal cost and price are equal. सही है. और allocative efficiency पे आपके आवाम की जो वो है सोशल वेलफेयर वो मैक्सिमाइज हो जाएगी. तो अगर मैं प्राइस यहाँ रख दूं P naught and the quantity is Q naught, आपकी एवरेज कॉस्ट क्या है ये है. सही है. सो एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, देयर विल बी इकोनॉमिक लॉसेस टू द फर्म. सही है. सो द फर्म विल मेक अ लॉस इफ दे गो फॉर एलोकेटिव सोशल वेलफेयर. भाई समझ में आ रहे हैं ना एमसीक्यूज. Is there any confusion up till now? अगला देखो. The information gives characteristic of a market structure. The two leading brands control 60%. Other large firms and a few smaller firms exist. मतलब कुछ firms आपकी exist कर रही हैं. Prices tends to be stable. There are significant barriers to entry. हाँ भाई कौन सा होना चाहिए market structure? It should be oligopoly. A few large firms, while there are also smaller firms, तो आपका concentration ratio निकलेगा. There should be oligopoly in the market. अगला देखो. The diagram shows a firm in a imperfect competition. सही है. It changed its aim from profit maximizing to sales revenue maximizing. Profit maximizing कहाँ थी इस point पे. अब वो क्या कर रहे हैं, sales revenue का maximize होगा जहाँ पे marginal revenue zero है, total revenue maximize जाएगा. Which type of profit was it making in each case? यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे तो जाहिर है ये प्राइस था और ये एवरेज कॉस्ट थी. कहाँ गई. You are making super normal profit. सही है. So super normal profit पहले. अब सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे अगर आप यहाँ पर जा रहे हो, at this point the marginal cost is the price will be ये P1 और अभी भी एवरेज कॉस्ट नीचे ही है. अभी भी आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही हो रहा है. सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है. सो द फर्म इज मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन बोथ द केसेस. सही है. तो दोनों केसेस में आपके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है. In various countries, the supply of public utilities such as water and electricity have been licensed by the government to a few private firms. What should the government do to persuade these profit-seeking private firms to not overcharge the consumer? where consumer को exploit ना किया जाए. Allow private firms to merge and create a monopoly? No. अगर वो monopoly बनेंगे तो obviously they will exploit the customers. Appoint a regulatory body to guarantee supplies at all times. सही. अगर आप रेगुलेटरी बॉडी को वो भी करते हो तो आप क्वांटिटी सप्लाई को इंश्योर कर रहे हो, प्राइसेस को नहीं कर रहे. दैट इज आल्सो इनकरेक्ट. डीरेगुलेट, अगर आप डीरेगुलेट करोगे तो अगेन जाहिर है फिर कंपटीशन वगैरह मतलब गवर्नमेंट की वॉच कम हो जाएगी और फर्म्स जो है वो ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे. इनेबल कस्टमर्स टू स्विच इजीली फ्रॉम वन प्राइवेट फर्म टू अनदर. सही है. हाँ अगर आप ये अलाउ कर दोगे कंज्यूमर को स्विच कर ले तो फिर जाहिर है सारी फर्म्स को अपने प्राइसेस कम रखने पड़ेंगे बिकॉज कंपटीशन ज्यादा होगा. कंज्यूमर कैन इजीली गो फ्रॉम वन टू द अदर फर्म. 14 देखो. A government intends to use pollution permits to reduce the environmental damage.
Under what circumstances is this policy most likely to fail to achieve the intended reduction? मतलब वो intended reduction ना कर पाए. Firms within the scheme are required to have sufficient number of permits to cover the amount of pollution. Firms improve their technology to reduce the number of permits they require. Firms that do not use all their permits can sell. अगर ये होगा तो ये जाहिर है बहुत अच्छा हो जाएगा. Tradable permits है. It won't fail. The permits do not impose strict enough limits to carbon emission. हाँ भाई, कौन से वाले केस में आपकी जो पॉलिसीज हैं they will fail? हाँ सही है कि जब आपके परमिट में कोई स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ना हो. हाँ तो इनएफिशिएंट हो जाएगी पॉलिसी. The government is committed to reducing the Gini coefficient. गवर्नमेंट ने क्या कहा है भाई, Gini coefficient को रिड्यूस करना है, मतलब इनकम इनइक्वालिटी को कम करना है. Which policy is most likely to fail to achieve this policy? कौन सी पॉलिसी फेल करेगी आपकी इनकम एंड वेल्थ की इनइक्वालिटी को? A decrease in ad valorem sales tax, इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी बेहतर मतलब कम हो जाएगा, गैप जो है वो इनकम Gini coefficient बेहतर हो जाएगा. गलत है. A more regressive income tax, a more progressive income tax या गुड. रिग्रेसिव होगा, हम गरीबों पे ज्यादा लगेगा तो इनकम एंड वेल्थ की इनइक्वालिटी बढ़ेगी, Gini coefficient बढ़ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा. गुड जॉब गाइस. अगला देखो 16. Which calculation would give the marginal revenue product MRP of a labor for a firm selling its product in an imperfectly competitive product market? अभी MRP कैसे कैलकुलेट होता है? Imperfectly competitive firm है. MRP is equal to marginal physical product of labor multiplied by marginal revenue. सही है. प्राइस के इक्वल कब होता है? जब आप परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में हो. So which one is marginal revenue? जल्दी जल्दी कौन सा है? C. सही है. Extra produce, which is your marginal physical product of labor multiplied by the marginal revenue of the labor. 17. The diagram shows the demand and supply of labor in 4 markets. In which market would labor transfer earning exceeds the economic rent? कौन सी वाली में ट्रांसफर अर्निंग ज्यादा, इकोनॉमिक रेंट कम है? देखो ट्रांसफर अर्निंग क्या होता है? ये वाला एरिया, ये आपका इकोनॉमिक रेंट है. एक तो इस वाले में एक ट्रांसफर अर्निंग ज्यादा है, इसमें क्या हो रहा है? इकोनॉमिक रेंट ज्यादा है, ट्रांसफर अर्निंग कम है, तो ये तो नहीं होगा. इसमें सारा का सारा इकोनॉमिक रेंट है, ये भी नहीं होगा. 4 वाले में सारी की सारी ट्रांसफर अर्निंग है, ये होगी. सही. इकोनॉमिक रेंट 0 है. 1 and 4. हाँ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, और जितनी ज्यादा सप्लाई जितनी ज्यादा इलास्टिक होगी आपका इकोनॉमिक रेंट कम होता जाएगा, ट्रांसफर अर्निंग बढ़ती चली जाएंगी. Which objective would not be suitable for a government if it was seeking sustainable economic growth? Sustainable economic growth के लिए कौन सा objective suitable नहीं है? Achieving the highest growth rate by using all natural resources, careful management of uses of the non-renewable resource, effective protection of environment, meeting the needs of both current and future population. हाँ भाई, sustainable ना हो कब उनकी development sustainable नहीं होगी? हाँ जब आप सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर लो, सही है, फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ से भी ना करो, तब आपकी इकोनॉमिक वो सस्टेनेबल होगी, नॉन सस्टेनेबल होगी. अगर देखो 19. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इट्स ग्रॉस नेशनल इनकम? डिफरेंस क्या है? कैपिटल कंजम्पशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, नेट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड एंड डी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट. हाँ क्या होना चाहिए? इट शुड बी net property income from abroad. Say gross national income also includes goods and services that are produced outside, say not just your physical border. 30 देखो, some individuals seeks to increase their share of existing wealth without creating new wealth.
This can be a problem in developing economies. What is this? What is an example of this behavior? A government official taking bribe for special treatment, or that person offering the bribe. A landowner renting a field. भाई ये तो जाहिर है आपने wealth create की है अगर आपने landowner. A landlord being paid through hire for a room, ये भी आपकी wealth creation है. Entrepreneur earning reward, ये भी आपकी. ये तीनों क्या है? ये आपकी मतलब वो है sort of you created the wealth and then that wealth will generate further wealth. ये क्या? गवर्नमेंट ऑफिशियल टेकिंग ब्राइब फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट. सही, ये आपके लिए मसला हो जाएगा. ये जो है ना आपका पुराना पाकिस्तान, अहमद निसार सब वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 21 देखो. व्हाट इज नेसेसरी टू इंक्लूड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड. हाँ भाई, कौन सी चीजें ऐड होनी चाहिए in order to come up to the rate of unemployment? Everyone of working age who is not in employment, those of pension age who still wants to work, and C, part-time employees. देखो, employment क्या होती है? Unemployment is people who are physically and mentally fit, सही है, to work of the working age, सही है. तो देखो, everyone of the working age who is not in employment, जो लोग employment में नहीं है, जैसे आपके पास full time students हैं 18 साल से बड़े, अगर वो नहीं है तो आप उनको include तो नहीं कर सकते, सही है. तो ये तो no होना चाहिए. Those of the pension age who still wants to work, सही है, willing and able to work हैं, सही है. अगर willing and able to work हैं तो आप इनको ऐड कर सकते हो, सही है. एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉइज, ऑब्वियसली यू विल ऐड द पार्ट टाइम एम्प्लॉइज, पार्ट टाइम, सेल्फ एम्प्लॉयड, सारे ऐड होंगे, सही. द आंसर विल बी बी. देखो. द डायग्राम शोज changes in the numbers employed in 4 different industries in a city between 2015 and 2020. ये फाइनेंशियल सेक्टर में था, ये मैन्युफैक्चरिंग के हैं, ये एजुकेशन के, लेजर के, सही है. परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, number of people employed. What is concluded from the diagram? Finance was always the largest employer. Fine, नहीं, पहले मैन्युफैक्चरिंग था, ये गलत है. Leisure had the fastest growth rate in employment. Leisure की growth rate क्या है? Leisure की growth rate यहाँ से आ रही है यूं, सही है. और it is sort of, ये जो leisure की growth है, ये देखो पहले एजुकेशन कहाँ से शुरू होता? ऑलमोस्ट ट्वाइस से, लेकिन अब ये बढ़ती जाएगी, ये हो सकता है. सी क्या? मैन्युफैक्चरिंग वाज द ओनली इंडस्ट्री टू शो साइंस ऑफ डिक्लाइन. नहीं, फाइनेंस भी तो डिक्लाइन कर रहा है, ये भी गलत है. डी क्या? द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द फोर सेक्टर्स डिक्रीज्ड ओवर द पीरियड. टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी है भाई? 50, 60, 20, ऑलमोस्ट 15. लेकिन ओवरऑल देखो, अगर आप ये 40 पे चली गई, सही है. मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, लेकिन एजुकेशन और लेजर जो है वो उतना ही ज्यादा बढ़ गया, तो डिक्लाइन एज सच नहीं आया, ये भी गलत है. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. लेजर एट द फास्टेस्ट ग्रोथ रेट इन एम्प्लॉय, सही है. अगला देखो. एट द start of the year, the production possibility frontier of an economy is at PPF1. ये आपका पहला production possibility frontier है, and the economy is at point S. सही है भाई, ये है point S पे. At the end of the year, the production possibility frontier is at PPF2 and the economy is at point T. Which diagram shows the economy has experienced actual growth but not potential? Actual growth हुई है, potential नहीं हुई. Potential कब होती है? होगा PPF outward shift हो जाए, सही है. Basically, अगर outward shift हो रहा है, अगर PPF is shifting, ये तो दोनों हट गए ऑप्शंस. डी में क्या हो रहा है? डी में आप ना अंदर आ रहे हो, सही है, which means कि ग्रोथ नहीं हो रही आपकी, प्रोडक्शन नीचे जा रही है. ओनली आंसर ए इज करेक्ट. हाँ, सही है, बिकॉज आप अपने पीबीसी पे मूव कर गए, व्हिच शोज एक्चुअल ग्रोथ. 24 देखो. द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस बाय 4000, whether at the same time investment falls by 1500. Marginal propensity to save, marginal propensity to tax, marginal propensity to import.
ये तीनों आपके पास दिए हुए हैं। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम? जल्दी पहले आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे साइज ऑफ द मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर के साइज से मल्टीप्लाई करा दोगे। 0.1, 0.2, 0.1, सही है। तो ये कितना हो गया भाई? 0.4। मल्टीप्लायर क्या था? 1 अपॉन लीकेजेस, 1/0.4 इज 2.5। 2.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना इंक्रीज आ रहा है? 4,000 से गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, 1,500 से इन्वेस्टमेंट नीचे जा रही है। 4,000 माइनस 1,500 इज 25। 2,500 से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, तो 2,500 इज 62। सही, ये आप क्या इंक्रीज आ जाएगा आपके जीडीपी में if there is government spending increasing by 4,000 and investment falling by 1,500. Is that clear? अगला देखो, which change will allow an economy an increase in an economy's money supply? Money supply कब increase होगी? An outflow of the currency? नहीं, outflow of currency for trade and capital purpose becomes inflow. ये हो सकता है, जो पहले आउटफ्लो हो रहा था वो इनफ्लो हो जाए, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। The central bank instructs commercial bank to give higher ratios for cash volume. रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, मनी सप्लाई कम होगी। The government budget balance moves from deficit to surplus. सरप्लस हो रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, ये इसका मनी सप्लाई ताल्लुक। ठीक है, the government replaces borrowing from the banks with borrowing from the general public. जनरल पब्लिक से गवर्नमेंट बोरो करेगी, मनी सप्लाई कम होगी। A is the correct answer. अगला देखो भाई, in a country the initial money supply curve is given by MS0. The initial liquidity preference curve is LB0 and the initial rate of interest is R0. If there is an increase in precautionary motives बढ़ गए for holding the money, which diagram shows changes that will occur? अगर precautionary motives बढ़ रहे हैं तो आपका जो liquidity preference curve है वो shift करना चाहिए, सही है, और वो inelastic region में shift करना चाहिए। इन दोनों में shift नहीं हो रहा, सही है, इसमें हो रहा है लेकिन पीछे हो रहा है। वो बोल रहे हैं प्रिकॉशनरी मोटिव्स की वजह से लोग इंक्रीज कर रहे हैं डिमांड ऑफ मनी, सही है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। दैट क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27. The UK give aids to Uganda government to spend on a school. One condition is that they must buy materials from the UK. भाई यूके से ही खरीदना है आपने मटेरियल्स। Which टाइप ऑफ एड डज नॉट टेक प्लेस? कौन सी टाइप ऑफ एड ये नहीं है? बायलैटरल तो है, दोनों कंट्रीज के बीच में है, प्रोजेक्ट भी है क्योंकि मतलब कंडीशन भी दे रहे हैं आप स्कूल स्पेंडिंग में, और टाइड भी है कि हमसे ही खरीदोगे। मल्टीलैटरल नहीं है, मतलब दो ही कंट्रीज इन्वॉल्व है सिर्फ। हाँ, अगर देखो, अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, व्हाट इज द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अ स्विच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंक्रीज इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो फॉर श्योर नहीं बढ़ता अगर आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, और ये स्विच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन ये शायद हो जाए। एंड इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, डेफिसिट भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो लोगों का पैसा कम हो जाएगा, इंपोर्ट्स में कम हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन द गवर्नमेंट, ये हो जाएगा गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट कम हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पे खर्चा करना पड़ेगा और टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। अगला देखो, द गवर्नमेंट ऑफ लेसोथो introduces a program to promote exports and encourage the firms to expand by subsidizing the local entrepreneurs. Which effect is this likely to have on incomes, balance of payment, current account deficit and government spending? देखो, इनकम्स क्या होंगी? अगर आप प्रमोट कर रहे हो एक्सपोर्ट्स को, इनकम शुड इंक्रीज, आपके लोकल लोगों की इनकम इंक्रीज होगी क्योंकि आप यू आर ऑल्सो सब्सिडाइजिंग द लोकल जो आपके वो हैं प्रोड्यूसर्स, तो इनकम आप क्या बढ़ेंगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाना चाहिए, सही है, इट शुड आइदर रिड्यूस और अनसर्टेन, सही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि लोकल आपके इंपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगे, सही है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होगी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड
increase because you are subsidizing the local entrepreneurs ना. हाँ सही है. तो करेक्ट आंसर इज डी. अब अनसर्टेन क्यों? क्योंकि जाहिर है आपको ये नहीं पता कि इनमें से इंपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. 30 देखो. A government currently has a balanced budget. Balanced budget का मतलब है T minus G is equals to 0. It is considering the possible variation in tax revenue and the government expenditure shown. भाई ये सारे हैं ऑप्शन. W में क्या है? टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ाओ. X में बढ़ाओ टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज करो. टैक्स रेवेन्यू को डिक्रीज करो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाओ. Z में क्या है? टैक्स रेवेन्यू रिड्यूस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस. Which three options are likely to have potential to move the budget into surplus? Budget surplus में चले जाए. T minus G is greater than 0 हो जाए. देखो अगर आप टैक्स को बढ़ाते हो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करते हो तब हो जाएगा. एक ही ऑप्शन सही है. दूसरा क्या है? दूसरा ऑप्शन ये कि आप दोनों को रिड्यूस कर दो लेकिन टैक्स रेवेन्यू को कम रिड्यूस करो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ज्यादा रिड्यूस करो. और तीसरा क्या है कि दोनों को इंक्रीज कर दो, टैक्स रेवेन्यू को ज्यादा इंक्रीज कर दो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम इंक्रीज करो. हाँ तो W, X एंड Z इन तीनों में पोटेंशियल है कि आपके गवर्नमेंट को रेवेन्यू को सरप्लस में लेके चले जाएं. सही है? इज देयर एनी डिफिकल्टी?